নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নেক্সট এক্সামটো হ'ব ইলেক্টিভ বিষয়ৰ, যিটো হৈছে তোমালোকৰ হিন্দী। ইয়াৰ পৰা আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ চাম, যিবিলাক তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনবিলাক হ'ব, যিটো তোমালোকৰ এক্সামত বাৰে বাৰে সুধি থাকে আৰু সেইবিলাকে কুৱেশ্যন প্ৰায় ৰিপিট হয়, কিয়নো হিন্দীত ইমান নতুন পেটাৰ্ণ এতিয়ালৈকে অনা নাই। ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবিলাকে প্ৰায় সোধে আৰু যিবিলাক কমন হয় মই সেইটো তোমালোকক দেখুৱাই দি যাম, ঠিক আছে। এতিয়া আহা আৰম্ভ কৰোঁ হিন্দী বিষয়ৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নকেইটা চাম। শেষলৈকে চাবা, A to Z তোমালোকক ৰিভিজন কৰি দিম আৰু লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকক দি যাম। হয়, মই জানো তোমালোক সকলোৰে ইলেক্টিভ বিষয় হিন্দী নহয়, সেইবাবে তোমালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যাৰ যাৰ হিন্দী বিষয় আছে তেওঁৰ লগত এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিবা। তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই উপযোগী ভিডিঅ'টো হ'ব এইখন, ঠিক আছে। প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো হৈছে তোমালোকৰ চিলেবাছ নিভ কি ইট, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আহা ইয়াৰ পৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনকেইটা প্ৰথমতে চাওঁ। গোটেই লেচনটো A to Z আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো প্ৰথমতে তোমালোকে ৰাম বৃক্ষ বেনিপুৰী যিয়ে লিখা নিভ কি ইট এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তোমালোকে কবি পৰিচয়টো ভালদৰে পঢ়ি ল'বা, জন্ম কিমান চনত হৈছিল, লগতে তেওঁ যিবিলাক সাহিত্য কৃতিসমূহ আছে সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, কিয়নো আজিকালি তোমালোকক লেখকৰ পৰিচয় বা কবি পৰিচয়ৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন উত্তৰ সুধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা, ঠিক আছে, চাই ল'বা। এতিয়া লেচনটো ভালদৰে পঢ়িলে ইয়াৰ গোটেইকেইটা উত্তৰ তোমালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিবা। কোনোবা এনেকুৱা নাই যে য'ত তোমালোকে টান শব্দ বা তেনেকুৱা বা সৰল শব্দবিলাকত লৈ পেলাই তোমালোকৰ পাঠটো দিয়া হৈছে। এইফালে চোৱা কুৱেশ্যনবিলাক, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথমটো মই তোমালোকক দিম। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईट का हो या व्यक्ति का। खूब इम्पॉर्टेंट হ'ব, ব্যাখ্যা কৰা, ভালদৰে চাই ল'বা, ঠিক আছে। মই তোমালোকক গোটেইকেইটা দিম, প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ব্যাখ্যা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া লং কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোকক দি দিব পাৰে যে कंगूरे के ईट की प्रतिकार्थ पर सम्यक प्रकाश डालो, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকো তোমালোকক সোধে, ঠিক আছে। এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনবিলাকটো তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে এইবছৰ যিটো পঢ়িছা এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনটো মই এইটো ক'লে তোমালোকে এইটোৰ উত্তৰ ডাইৰেক্ট কৈ দিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা হ'ব লাগিব। এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন কোনো তোমালোকৰ এইবিলাক পৰীক্ষাৰ আগত চাই থকা বস্তু নহয়, ঠিক আছে। তথাপিও তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰত চাবা যে নিভ কি ইট কো হিলা দেনে কা পৰিণাম কিয়া হোগা, এইটো চাবা তোমালোকে। বেনিপুৰী যিটো আছে তোমালোকৰ স্বৰ্গবাস কব হোৱা বা জন্ম কেতিয়া হৈছিল এইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা। চমকিলি সুন্দৰ সুগঢ় ইমাৰত বস্তুত কিছ पर टिकी होती है, এইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা। आज किसके लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াৰ পৰা 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন তোমালোকক সোধে যে মনুষ্য সত্য से क्यों भागता है, এইটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে कंगूरे के ईट की भूमिका स्पष्ट करो, এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু এইটো কুৱেশ্যনটো সোধে তোমালোকক যে आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है, এইটো কুৱেশ্যনটো সোধে তোমালোকক ভালদৰে চাই ল'বা, ঠিক আছে। नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব এইটো लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों, এইটো কুৱেশ্যনটো সোধে, এক্সামত অহা কুৱেশ্যন হয়, ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু লগতে भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा, এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, ঠিক আছে। ইমানখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাবা, নিশ্চয় এইকেইটাই আহে। আৰু এতিয়ালৈকে বেলেগ আহিছে কিন্তু এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভালদৰে চাই ল'বা। আৰু পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে গোটেইকেইটা এনচাৰ তোমালোকৰ মুখৰ আগতে এইকেইটা গোটেইকেইটা আহি যাব। সেইকাৰণে পাঠবোৰ ভালদৰে কৰিবা, তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবা তোমালোকে, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট চাওঁ জয়শংকৰ প্ৰসাদ, একেই সেম কবি পৰিচয় ভালদৰে পঢ়িবা তোমালোকে, ঠিক আছে। আৰু যেনে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তোমালোকে ন'টিছ কৰিবা, যেনে উনকি অৰ্থাৎ কাৰ, জয়শংকৰ প্ৰসাদৰ প্ৰথম কাহানী গ্ৰাম 1911 ইন্দু নামক পত্ৰিকা মে প্ৰকাশ हुई थी, এনেকুৱা পইণ্টকেইটা, যিটো প্ৰথম কাহিনী বা প্ৰথম উপন্যাস, এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এনেকুৱা অহাৰ চান্স বেছি থাকে, ঠিক আছে। এনেকুৱা কথাবিলাক তোমালোকে আগতে এইবিলাক পইণ্ট ৱাইজ তোমালোকে লিখি ল'ব লাগে এইকেইটা, ঠিক আছে। এইকেইটা ৰিভিজন কৰি ল'বা ভালদৰে আৰু কবি পৰিচয়টো ভালদৰে পঢ়িবা। নেক্সট এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াৰ পৰা ছোটা যাদুঘৰ, বহুত ধুনীয়া পাঠটো পঢ়ি ল'বা তোমালোকে এক্সামৰ আগত। আৰু তোমালোকক এতিয়া সুধিব আৰম্ভ কৰিছে যে
এনেকুৱা ধৰণৰ তো सही विकल्प चयन करो एमसीक्यू তোমালোকক দি দিয়ে তোমালোকে এইবিলাক চাই ল'বা এই जो कार्निवाल के मैदान में लड़का चुपचाप किनको देख रहा था लड़के को जादूगर का कौन सा खेल अच्छा मालूम हुआ এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা এইটো क्वेश्चन टू চাবা लड़का तमाशा देखने पर्दे में क्यों नहीं गया था এই क्वेश्चन टू চাই ল'বা बालक छोटे जादूगर को किसने बहुत ही शीघ्र चतुर बना दिया था এইটো क्वेश्चन टू চাবা আৰু লগতে लड़का जादूगर को क्या समझता था क्वेश्चन टू खुदे এইবিলাক क्वेश्चन ইয়াৰ পৰা বাৰে এইবিলাকে ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে নেক্সট চোৱা এতিয়া যিমানকেইটা কুৱেশ্যন দেখুৱাই দিছোঁ ইমানকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্টত অহা হাফ ইয়াৰলিত অহা কুৱেশ্যনকেইটা চাই ল'বা চাবা তোমালোকৰ আৰামত তোমালোকে 80+ পাই যাবা আৰামত হিন্দীত ইমান তোমালোকে ভয় কৰিবই নালাগে হিন্দীত তোমালোকে ভাল মাৰ্ক নিশ্চয় পাব পাৰা কিন্তু তোমালোকে পাঠবোৰ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব লাগে ঠিক আছে এইটো চোৱা मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ उसके अभाव में वो भी संपूर्णता थी এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব এইটো क्वेश्चन श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया मैट्रिकत खुदा क्वेश्चन है ठीक है এইবোৰ চাই ল'ব अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা এইটো क्वेश्चन टू চাবা आज तुम्हारे खेल जमा क्यों नहीं इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा और লগতে তোমালোকে চাব লাগিব এইটো श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहले भेंट के दौरान किस रूप में देखा था এইবিলাক তোমালোকক খুদে ঠিক আছে नेक्स्ट তোমালোকে এইটো क्वेश्चन टू চাবা छोटे जादूगर का देश प्रेम और मातृभक्ति का परिचय दो प्योर এইটো क्वेश्चन टू खुदे তোমালোকক रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत खुदे এইটো क्वेश्चन टू नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব छोटे जादूगर की चतुराई और कार्यकुशलता का वर्णन करो এইবিলাক क्वेश्चन তোমালোকক বাৰে खुदे এইবিলাক চাই ল'বা বাকি কিটা তোমালোকক যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুলি ভাবা সেইটো তোমালোকে চাবা অকল মই দিয়াই চাব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া চোৱা महादेवी वर्मा जी का তোমালোকে पॉइंट जेने मैं तुम लोगों को केवल 8 वर्ष की उम्र में 12 हमेशा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা চোৱা তোমালোকে 8 বছৰ বয়সতে তেওঁ কবিতা লিখিয়া এনেকুৱা আৰম্ভ কৰিছে এইবিলাক সৰু পইণ্ট কিটা তোমালোকক আজিকালি क्वेश्चन অলপ ক্ৰিটিকেল কৰি দিয়ে যে সেইভাবে তোমালোকে এইগিটা চাব লাগিব নীলকণ্ঠ এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি ল'বা তোমালোকে গোটেইগিটা क्वेश्चने তোমালোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কেইটামান गुरुत्वपूर्ण प्रश्न चाब लगे जिबिलाक होइसे एटू नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यारा था और क्यों क्वेश्चन टू खुदे तुम्हालोকক ठीक है एटू एक क्वेश्चन तुम्हालोके भालदरे चाइ लइबा जे महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था और एटू जोबारे खुदिसे नेকি एटू क्वेश्चन मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया खुदे এইবিলাক क्वेश्चन সেইকাৰণে কৈছো আৰু তোমালোকক কৈছো যে এমসিকিউ বিলাকো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই দিবা सही विकल्प का चयन करो এইবিলাক আজিকালি খুদিবলৈ লৈছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকে চাব লাগিব এইটো क्वेश्चन लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन क्यों चुना होगा मयूर की विशेषताओं के आधार पर उत्तर दो এইটো क्वेश्चन टू खुदे ठीक है और এইটো क्वेश्चन खुदे जे नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्दों में करो और তোমালোকে চাব লাগিব नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से किस तरह बचाया लेखिका का नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थे এই দুটা क्वेश्चन তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় এটা তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা ঠিক আছে এইগিটা क्वेश्चन তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু তোমালোকে লং क्वेश्चन যদি খুদি দিয়ে এইটো কুব্জা और राधा के आचरण में क्या क्या अंतर परिलक्षित होते हैं क्यों এইগিটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে नेक्स्ट लेसन टू হৈছে তোমালোকৰ হৰিশংকৰ परसाয়ে লিখা তোমালোকৰ আছে भोलाराम का जीव ठीक है लेखकर परिचय तुम्हारे भालदरे चाइ लबा यार पर एमसीक्यू समूह तुम्हारे चाइ लबा एक नम्बरिया क्वेश्चन है तुम्हारे एबार पढ़िले तुम्हारे मनत रही যাব तुम्हारे एक नम्बरिया क्वेश्चन याद चाबा भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया दिया था एडुकेशन चाइ लबा और लगते एटू भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया এইবিলাক तुम्हारे भालदरे चाइ लबा और 2 नम्बरिया क्वेश्चन भीतर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था यह किस घटना का संकेत मिलता है এনেকুৱা ধৰণৰ क्वेश्चन বিলাক তোমালোকক खुदे চাই ল'বা यमदूत ने भोलाराम के जीप के लापता होने के बारे में क्या बताया এইটো क्वेश्चन टू खुदी से ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी এইটো क्वेश्चन टू চাই ল'বা আৰু লগতে भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो এইগিটা क्वेश्चन खुदे তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা ঠিক আছে नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব रविन्द्रनाथ ठाकुर कवि परिचय तुम्हारे भालदरे चाइ लबा लिखिसे कि सड़क की बात यार
কেইটামান কুৱেশ্যনবিলাক সোধে যিটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী হ'ব চাবলৈ ঠিক আছে 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন যেটো আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু তোমালোকক খুদে যে सड़क ने अपनी निद्रा अवस्था की तुलना किससे की है एटू क्वेश्चन टू চাই লবা আৰু লগতে सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है एटू क्वेश्चन टू তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা আৰু এটু क्वेश्चन टू खुदे जे गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप से संबंधित किया था एटू क्वेश्चन टू सम्बोधित किया था एटू क्वेश्चन टू ভালদৰে চাই লবা ঠিক আছে नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालो एटू क्वेश्चन टू खुदे सड़क साप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है एटू क्वेश्चन टू खुदे और তোমালোকে চাই লবা नेक्स्ट তোমালোকে राहगीर के पाँव के शब्द को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है एटू क्वेश्चन टू তোমালোকে खुदे চাই লবা ঠিক আছে नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব एटू क्वेश्चन टू मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूं सबका उपाय मात्र हूं सड़क ने ऐसा क्यों कहा एटू क्वेश्चन टू চাই লবা और नेक्स्ट তোমালোকে চাব লাগিব सड़क अपने ऊपर से नियमित रूप से चलने वाले की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती है एटू क्वेश्चन टू ভালদৰে চাই লবা ঠিক আছে এইবিলাক খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে नेक्स्ट चिठियों की अनोखी दुनिया ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাব লাগিব गांधी एटू क्वेश्चन टू खुदे गांधी जी के पास देश दुनिया के आए पत्रों का जवाब वो किस प्रकार देते थे एटू क्वेश्चन टू तुम्हालोक खुदे और तुम्हालोक एटू क्वेश्चन टू सुना पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता एटू क्वेश्चन टू खुदे तुम्हालोक चाই লবা क्या चिठिया की जगह कभी फैक्स ईमेल टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं ये एटू क्वेश्चन टू खुदे तुम्हालोक ভালদৰে চাই লবা संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो एटू क्वेश्चन टू खुदे तुम्हालोक ভালদৰে চাই লবা ঠিক আছে नेक्स्ट तुम्हालोके एटू क्वेश्चन एबार चाই দিব পাৰে যে भारतीय डाकघरों की बहु आयामी भूमिका पर आलोकपात करो नाहिब पारे तथापि तुम्हालोके एबार चाই दिबा আৰু লগতে তোমালোকে एटू क्वेश्चन टू खुदे खुदिसे मेट्रिकत पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं সেই কাৰণে তোমালোকে एमसीक्यू সমূহ যিমান কিটা লেসনৰ एमसीक्यू সমূহ দিয়া আছে গোটে কিটা তোমালোকে এফালৰ পৰা চাই দিবা ঠিক আছে ভালদৰে পঢ়িবা সেলফ স্টাডি ভালদৰে কৰিবা মই যিমানখিনি দেখুৱাই দিছো তোমালোকে হেগিটা ভালদৰে পঢ়িবা আৰু নেক্সট তোমালোকৰ যেটো কৈছো মই অলৰেডি প্ৰি ফাইনাল যিবিলাক কোৱেশ্চন বিলাক আহিছে হেইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাবা মই কৈছো না তোমালোকে 80+ সিওর পাবা টেনশন কৰিবই নালাগে ঠিক আছে কবির দাস এতিয়া কবি পৰিচয় ভালদৰে পঢ়ি লবা এও লিখিছে তোমালোকৰ সাখী ভালদৰে এটো চাই লবা নেক্সট তোমালোকৰ এতিয়া আহিব এমসিকিউ ভালদৰে চাই দিবা ইয়াত कबीर शब्द का अर्थ तुम्हारा खुदे ठीक है साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए एटू क्वेश्चन टू खुदे ठीक है कबीरदास जी के आराध्य एटू खुदी दे तुम नेक्स्ट तुम्हारे एटू सदगुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट का तात्पर्य बताओ एनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन तुम्हारा खुदे और लगते गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं एटू क्वेश्चन खुदे भालदरे चाই दिबा और लगते तुम्हारे बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है एटू क्वेश्चन तुम्हारा खुदे চাই লবা ঠিক আছে नेक्स्ट तुम्हारे यार পৰা व्याख्या करो ভিতৰত তোমালোকে জানা এইবিলাক খুদে যে সেই কাৰণে তোমালোকে कल करे सो आज करे एटू घ নম্বৰৰ আৰু এটু ক নম্বৰৰ জাতি না পুছো সাধু কি ফেভারিট क्वेश्चन है एटू एग्जामिनार प्राय দিয়ে কেভাবে এইবিলাক তোমালোকে ইগনোর নকৰিবা চাই পেলাই যাবা ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব মীরাবাই লিখিছে কি লিখিছে পদত্রয় ঠিক আছে এইটো ব্যাখ্যা কৰাটো খুদে माहे घर आवे एटू तुम्हालोके चाই লবা আৰু मैं तेरे चरण लगे एटू केতিয়াবা खुदी दे एटू तुम्हालोके ভালদৰে চাই লবা ঠিক আছে नेक्स्ट तुम्हालोके চাব লাগে पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर कारण 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हालोকক দি দিব পাৰে ভালদৰে চাই লবা कवियत्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो एटू क्वेश्चन खुदिसे मीरा भजनों के लोकप्रियता पर प्रकाश डालो एटू क्वेश्चन और मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था एटू क्वेश्चन तुम्हालोকক खुदे और लगते तुम्हारे प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को नछावर करने वाले मीराबाई ने अपने आराध्य को क्या क्या निवेदन किया एटू क्वेश्चन खुदे तुम्हालोक চাই দিবা नेक्स्ट চাবত লাগিব তোমালোকে এক নম্বৰীয়া क्वेश्चन কৈছো না গুটে গিটা তোমালোকে চাই দিবা এইবিলাক তো তোমালোকৰ মুখৰ আগতে এইবিলাক ৰৈ থাকিব লাগে हरिवंश राय बच्चन जी का जो बीत गई बहुत ধুনিয়া কবিতা হয় ठीक है नेक्स्ट तुम्हारे चाब लगे एमसीक्यू दुटा तुम्हारे चाই लबा और यू अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर
क्या अंबर शोक मनाता है এইটো क्वेश्चन खुदे और এইটো क्वेश्चन बहुत रिपीट है हमें मधुबन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है এইটো क्वेश्चन बहुत रिपीट है তোমালোকে দেখিছা চাগে এক্সামবিলাকত খুদে তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্টতো হয়তো তোমালোকৰ যোনটো জিলাৰ পৰা চাইছা এইটো জিলাৰ তোমালোকক এইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছে এইটো मधु के घट और प्यालो से किन लोगों का लगाव होता है এইটো কুৱেশ্যনটো চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব এইটো ব্যাখ্যা কৰা जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था এইটো চাই ল'বা ব্যাখ্যা কৰা আৰু কেতিয়াবা এইটো তোমালোকক দি দিয়ে যে मृदु मिट्टी के है बने हुए मधु घट ফুটা হি करते हैं দুটা আছে দুটা তোমালোকে চাই দিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে আৰু পাঠটো তোমালোকে এইটো কবিতাটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'বা তোমালোকে কোৱেশ্চন কিটা ভালদৰে কৰিব পাৰিবা নেক্সট रामधारी सिंह दिनकर कलम और तलवार কবি পৰিচয় ভালদৰে পঢ়ি ল'বা আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনবিলাক তোমালোকে চাব লাগিব अक्षर चिंगारी कैसे बनती है खुदे एक नंबर क्वेश्चन गोटेकिटा तुम्हारे भालदरे चाई दिबा और लगते तुम्हारे एटू चाबा कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करोगे और क्यों तुम्हारे एटा एटू जुक्ति दरकुआ टाइपर क्वेश्चन है तुम्हारे दी दी पारे भालदरे चाई दिबा इस कविता में अर्थात कलम और तलवार कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है एटू क्वेश्चन तुम्हारे खुदी दी पारे और तुम्हारे चाबा और तुम्हारे कलम और तलवार कविता का सारांश लिखो बा कलम और तलवार कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है जी क्वेश्चन प्रेरणा मिलती है ये क्वेश्चन तुम्हारे जेनेका मूल भाव लिखिबले है तेनेका टाइप तुम्हारे दी दी पारे तुम्हारे ये चाई दिबा ठीक है नेक्स्ट तुम्हारे नरेंद्र शर्मा जी तुम्हारे ये कवि परिचय भालदरे चाई दिबा साहित्य कृतिसमूह की आछे काव्य कृति ये तुम्हारे भालदरे चाई लबा कायर मतबन ये क्वेश्चनर पर तुम्हारे चाब लागिब कायर मतबन शीर्षक कविता का संदेश क्या है तुम्हारे जी मैं कैसा अलरेडी कायर मतबन और तुम्हारे कलम और तलवार ये दुटार पर तुम्हारे खुदी दी पारे चाई दिबा और बेलेगो चाबा किन्तु ये दुटा मोस्ट इम्पर्टेन्ट बुली मैं भावो कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है एडुकेशन चाबा और लगते कवि ने किसे ठोकर मारने की बात कही है द्रौपदी खंड काव्य के रचयिता कौन है बा ये एक नंबर क्वेश्चन सही या गलत ये तुम्हारे दिए तुम्हारे भालदरे ये चाई लबा ये चुआ कवि की दृष्टि में जीवन के सत्य का सही माप क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाई दिबा नेक्स्ट तुम्हारे चुआ कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन ये तुम्हारे आशा स्पष्ट करो ये क्वेश्चन चाई दिबा और लगते सज्जन और दुर्जन के प्रति मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए पठित कायर मतबन कविता के आधार पर लिखो चाई दिबा ठीक है नेक्स्ट तुम्हारे व्याख्या करार भर ले देकर जीना युगों तक खून पसीना जिकेटा कैसो ये तुम्हारे भालदरे चाई दिबा ठीक है नेक्स्ट तुम्हारे चाब लागिब नरेश मेहता जीर कवि परिचय तो भालदरे चाई लबा कि लिखिছে मृत्तिका यार पर तुम्हारे चाब लागिब मिट्टी को मातृरूपा होने का आशा स्पष्ट करो ये क्वेश्चन चाबा मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना है क्यों ये क्वेश्चन चाबा पुरुषार्थ को सबसे बड़ा दैवत्य क्यों माना है मिट्टी और मनुष्यों में तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो एनेकुवा धৰণৰ क्वेश्चन खुदे ये तुम्हारे भालदरे चाई दिबा ठीक है इमानखिनिए है आहात एतिया तुम्हारे रचना किटु तुम्हारे निबंध लिखा कोनटो इम्पर्टेन्ट हम ये चाओ और तार आगते मैं कै दूँ जिमानकिटा मैं क्वेश्चन तुम्हारे देखुवाई दिसो সেইকেইটা तुम्हारे भालदरे चाबा और बेस्ट उपाय कि है तुम्हारे जाने तुम्हारे प्रि टेस्ट जितु आहिसे নহয় एग्जाम जिबिला क्वेश्चन आहिसे प्रि टेस्टत हेतु तुम्हारे भालदरे सल्व करिबा और लगते जिमानकिटा डिस्ट्रिक्टर तुम्हारे प्रि टेस्टर क्वेश्चन पाइसा हिंदी সেইকেইটা গোটেইকেইটা सल्व কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা और तुम्हारे निजर फाলৰ পৰা যোনটো इम्पर्टेन्ट হয় বুলি ভাবা সেইটো क्वेश्चन तुम्हारे भालदरे चाई पेलाई जाबा ठीक है आहा এতিয়া তোমালোকৰ निबंध कोनটো गुरुत्वपूर्ण है এইটো চাও निबंध लिखाটো जितु অসমীয়া তোমালোকৰ আহে प्राय तुम्हारे सेम हिंदी तो हेतुए अहा देखा जाए तुम्हारे प्रिवियस इयर पेपारबूर चाले तुम्हारे गम पाबा मैं एने कोआ ना तुम्हारे चाई दिबा तथापि मैं तुम्हारे कारण निबंध लिखा प्रिय साहित्यकार असम का जातीय उत्सव कम्पिउटार और प्रदूषण ये तीनिटा এই চাৰিটাটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা আৰু ইয়াৰ বাহিৰত যদি তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা এড কৰিব বিচাৰা কিবা এটা বা দুটা তোমালোকে এড কৰিব বিচাৰা তোমালোকে ভালদৰে এইটো চাই দিব পাৰা আৰু লগতে তোমালোকে প্ৰি টেষ্টত কি আহিছে তোমালোকৰ শিক্ষকসকলে কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বুলি তোমালোকক কৈছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চাব পাৰিবা আৰু লগতে চোৱা কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে জানে ক্ৰিটিকেল হিচাপত দি আছে সেইকাৰণে প্লান বিটো তোমালোকে কি কৰিবা যদি তোমালোকে গোটেই হিন্দীৰ গোটেই লেসন কিটা ভালদৰে পঢ়ি দিয়া গোটেই কিটা উত্তৰ তোমালোকে চকু বন্ধ কৰি পেলাই লিখিব পাৰিবা সেই কাৰণে সেলফ ষ্টাডি পাঠবোৰ ভালদৰে পঢ়িবা ঠিক আছে।
আৰু নেক্সট তোমালোকে যিটো পত্ৰ আবেদনটো আছে তোমালোকে এইটো চাই দিব পাৰিবা যে चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र देने के लिए अपने स्कूल के प्रधान आचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो अथवा तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखो এনেকুৱা ধৰণৰ পত্ৰ লিখা তোমালোকে ভালদৰে চাই দিবা আৰু হিন্দী আৰু অসমীয়াৰ পত্ৰ লিখা ইমান ডিফাৰেন্স নাথাকে যেটো তোমালোকে অসমীয়াৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিছে হেইটোৱে সেম তোমালোকে হিন্দীত লিখিব লাগে ইমান টেনচন ল'ব নালাগে সো মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো এইকেইটা কোৱেশ্চন ভালদৰে চাই দিবা আৰু নেক্সট তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বুলি ভাবা হেইকেইটা তোমালোকে গুটেই চাই দিবা আৰু যদি তোমালোকক এটা মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে অহাকালি ৰাতিপুৱা অৰ্থাৎ অহাকালি হ'ল তোমালোকৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তোমালোকক লাগে যদি তোমালোকে মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ বুলি এটা কমেন্ট কৰি দিবা মই তোমালোকক 8টা মান বজাত বা 9টা মান বজাত ৰাতিপুৱা তোমালোকক মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ এটা আপলোড কৰি দিম সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিমান কিটা কোৱেশ্চন কিটা দিছো হেকিটা ভালদৰে পঢ়িবা আৰু প্লান বি মই তোমালোকক কলুৱে যদি তোমালোকে গুটেই কিটা পাঠ আৰু কোৱেশ্চন বিলাক ক্ষমা কৰিবা গুটেই কিটা পাঠ আৰু কবিতা বিলাক ভালদৰে পঢ়ি দিয়া হেইকিটাই তোমালোকৰ সাফিসিয়েন্ট হৈ যাব 80+ কাৰণে কিয়নো হিন্দীত প্ৰায় সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল নম্বৰ পায় কেবাবে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰিবা মই কৈয়ে থাকো সেলফ স্টাডি বেস্ট হয় সেলফ স্টাডিয়ে তোমালোকে ভালদৰে কৰিব লাগে কিয়নো এক্সাম তুমি লিখিবলৈ যোৱা ঠিক আছে ভালদৰে পঢ়া-শুনা কৰিবা বেষ্ট অফ লাক